So today, first thing we are going to study about the introduction. What is the basic of intro? Okay, what is ICD and how it evaluated and what all whole process of evolution. Like earlier we used volume 9, now we are using volume 10. We are coming with volume 11. So all these things. Okay, what is the different types of classification? What is the purpose of this application and everything? Okay, so the International Statistical Classification of Diseases, ICD, stands for International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th version is the internationally prescribed by WHO, which is we are currently and frequently using this volume. Okay, and why do we need this? So that the morbidity and mortality databases are comparable within the various regions. I told you, for example, like COVID-19, if I talk about, some people will, the different, if we don't have a common understanding, so we will name it as different. And when we store the data, like in our country in 2019 or in 2020, people died with this disease, pandemic disease. Okay, in other country, they are saving with COVID. In third country, they are saving with third name. So this what happens ki when we compare the data ki whether this disease is pandemic or epidemic, so we will not able to exactly configure the situation. That's why we set this common classification of diseases, so it will be very easy for every country to evaluate the database, compare them, and you know we can come to the conclusion कि, okay, this is the common disease which is spreading very rapidly into the every part of country and between the regions of the world. Okay, so such reliable information is essential for the meaningful conclusion of health status. Okay, so in order to come to a conclusion कि, okay, this is the current health status of that particular region or that particular population, so we can gradually start our programs accordingly. Okay, so to development of the health, better health status of that people in that particular region. Okay, so for all these functionalities, we need an international classification. So ICD-10 coding was introduced by WHO in year 1993, and India adopted the same in year 2000. Okay, so you can see कि 1993 में WHO ने ये क्या कहते हैं आपका ICD कोडिंग को इनिशिएट किया था 1993 10th वॉल्यूम, ठीक है। और हमने कब अडॉप्ट किया उसको, इंडियन पॉपुलेशन ने कब अडॉप्ट किया, बाय 2000. So if I talk about historical background, Francois Bozzi de Laxorix, इन्होंने 1706 से 1777 में जो है इस फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने ट्राई किया था कि हम डिजीज को कैसे सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करें. फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चीज को हम क्लासिफाई कर देते हैं तो व्हाट हैपेंस, आपको मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाता है. किसी चीज को मैं अरेंज कर दूं तो आपको समझना. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फोल्डर है, मैं उसको अल्फाबेटिक या मैं उसको डिजीज वाइज या मैं उसको न्यूमेरिकल न्यूमेरिक्स में अच्छे से अरेंज कर दूं 1 2 3 4, तो आपको क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा कि थर्ड नंबर रिप्रेजेंट दिस, फोर्थ नंबर रिप्रेजेंट दिस, फिफ्थ नंबर रिप्रेजेंट दिस. ओके, बट अगर मैं एक एक फाइल को अरेंज करूं और फिर आपको कहूं कि आप मेमोराइज करो या ये करो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज दैट होल डाटा. ओके, so this is the first attempt they have done in 1706 to 1777. Okay, so treasure was published under the title of Nostalgia Methodologica. So फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हुआ तो इन्होंने इस मतलब नेम के अंदर नॉस्टैल्जिया मेथोडोडिका में के अंदर इन्होंने पब्लिश किया. So the contemporary savage was greater methodologist and one of those who treasures the genera and moribum. तो ये इन्होंने जो आपका क्लासिफिकेशन आप देखेंगे उसमें जेनरा जीनस इनके बेसिस पे जो है कि किस जीन का प्राणी है, मीन्स विच कैटेगरी ऑफ दैट डिजीज और microorganism, what kind of disease it is causing. On the basis of that, he has first attempted to classify the disease condition. At next, in Paris, 1885, submitted two separate lists which were based on different principles.
आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि पेरिस में डिफरेंट साइंटिस्ट ने फार एंड एप्सिलन ने ये सेकंड अटेम्प्ट ट्राई किया और उन्होंने सेपरेट टू लिस्ट को सबमिट किया, ठीक है। और फास्ट क्लासिफिकेशन वाज अरेंज अंडर 5 ग्रुप्स। इन्होंने 5 ग्रुप्स के अंदर की एपिडेमिक डिजीज कौन सी है, जनरल डिजीजेस कौन सी कैटेगरी में है, लोकल डिजीजेस कौन सी कैटेगरी में है, एंड डेवलपमेंटल डिजीजेस कौन सी कैटेगरी में है, डिजीज दैट आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वायलेंस वो कौन सी कैटेगरी में है। तो इन्होंने जनरल इस बेसिस पे इसको अरेंज किया, क्लासिफाई किया। सो ये बेसिक 5 कैटेगरीज में एप्सिन ने क्लासिफाई किया। एप्सिन क्लासिफिकेशन डिजीज अकॉर्डिंग टू द नेचर कि हेपेटिक है, गाउटी है, मीन्स कि आपका जीआई ट्रैक्ट से है या ब्लड रिलेटेड है, इस बेसिस पे भी एप्सिन ने क्लासिफाई किया। एक ने तो किया कि भैया लोकल है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, या क्या इम्पैक्ट ला रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही डिसाइडेड। But second people, what he has done, he has decided कि okay, hepatic blood related diseases one category, okay, GI related diseases third category. So the Congress adopted a compromise list of 139 rubrics. अब इन्होंने सॉरी, जो भी कमिटी थी उसने क्या किया, उसने कॉम्प्रोमाइज लिस्ट, दोनों की एग्जैक्ट लिस्ट को नहीं पिक करके उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज लिस्ट की, इतना हमें नीड है, वी विल जस्ट टेक दिस मच। सो 139 रिबेट्स का इन्होंने कॉम्प्रोमाइज लिस्ट वहां से अडॉप्ट किया। So in 1864, the classification was revised in Paris on the basis of Far's model and subsequently further revised in 1874, 1888 and 1886. So Far's model को further हमने revise किया as per the need. Although the classification was never universally accepted. अब ये locally accepted था, जो भी classification इन लोगों ने दिया था, universally accepted नहीं था। So the general arrangement and purpose by parts, including the principles of classifying diseases by anatomical sites, survives as basis of the international causes of death. So why we need, to check what is the exact cause of mortality, what is the exact cause of death. Okay, so on the basis of that. So Jacques Berendon, the chief of statistical services in the city of Paris, prepared the classification of causes of death. So he prepared another list ki what causes death. Okay. So the classification was based on principle adopted by FAR. फार की आपका जो प्रिंसिपल है फर्दर भी स्टडीड कि फार ने क्या किया था, आपका जो है डिजीजेस को फर्दर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, एपिडेमिक, पेंडेमिक और इन सब बेसिस पे, उसी के बेसिस पे इन्होंने फर्दर पिक किया। ओके, एंड डिस्टिंग्विश द जनरल डिजीजेस दोज लोकलाइज्ड टू अ पर्टिकुलर organ or anatomical site. How he used, he classified the diseases. Okay, this disease causes death. Okay, this is spreading to this particular area, this particular region, or this particular organ, or this particular anatomy. Okay, so the French government therefore convoked in Paris in August 1990 the first international conference for the revise of Barrington International list that causes death. So that the person, the surveyor, statistical surveyor of the hill, he made the list, and now in first international conference, he discussed that list that was prepared by Bertillon. Okay, and Bertillon continued to be the guiding force in promotion of international list of causes of death and revision in 1900 and 1910 and 20. So that list was now discussed internationally and little bit accepted. And the revision of that list was taking place further. Its second conference was held in 1909 and the government of France called succeeding conference in 2020, 29 and 38. So the mixed commission was created with equal numbers of representatives for International Statistical Institute and Health Organization of Leagues of Nations. So what happens is statics, if I talk about in numbers, static is always related to numbers. Okay. So graphics, numbers, representation, and all those things will come under the part of statics. Okay.
So they develop a committee, okay, to represent the statistical death rate, to birth rate, and the health status of every nation. Okay, so the committee was formed and the commission drafted the proposal for fourth and fifth revision of international list causes of death. So earlier three lists have been, made. First one is by Pars, then second one is by this person Wellington, and third was by revision of the Wellington list. Okay, so subsequently, what happens? He asked for the fourth and fifth list, international list that causes death. Okay, the sixth revision of international list causes death was held in New York, June 1946. The conference approved the international form of medical certificates of causes of death. Till now, we are only focusing those category of diseases which causes death and accepted as underlying causes of death are the main causes to tabulate and endorse the rules. Okay, so till now we are focusing, we are not that much, advanced. So we are generally focusing on what? What causes the death as well as morbidity and mortality data. Means morbidity means ki birth rate or healthy population, and mortality means death data. So this is, the certificate which we, give initially. International forms and medical certificate causes death. So this is the general disease directly leading to the death. A, B, consequences, C, due to consequences of this. So in, order we write. कि अगर for example किसी को typhoid हो, what happens in typhoid? So patient is severely sick. If he or she is severely sick, what happens? They are suffering from septicemia. The second category is severely sick, leading to septicemia. After septicemia, what happens? Consequences of that particular septicemia. So C category, we will write that leads to death of the person or multiple organ failure, and D leads to as a consequence of multiple organ failure. What happens? That person died. So this is how we, generally fill this certificate. Okay. And other contributing, factors like the respiratory failure, ho gaya, organ failure, ho gaya, whatever may be the reason, we write. Okay. So this is the earlier that, for example, they have shown here the direct cause of death is cerebral hemorrhage due to metastasis of brain. The main cause of the death is person died to cerebral hemorrhage. But why the cerebral hemorrhage happens? Because of metastasis of brain. So there is some, infection or tumor that leads to the that particular. So you can see, breast cancer is there. In that breast cancer, the cancerous cell metastasize move to the brain, and there what it causes the growth, and it will lead to the cerebral hemorrhage. Okay, so ब्रेस्ट कैंसर 5 साल से था, मेटास्टेसिस हुआ 4 मंथ से, एंड उस मेटास्टेसिस से क्या हुआ? सेरेब्रल हैमरेज 4 आवर्स. तो यू कैन सी कि हाउ सीवियरली, अगर वो कैंसर सेल मेटास्टेसाइज हो जाए टू अनदर पार्ट एंड ब्रेन, स्पेशली ब्रेन, so how fast it will accelerate the death. So in this, they used to write other significant condition. What they have mentioned, the patient is having arterial hypertension for 3 years and diabetic for 10 years. Okay, and so these are the associated disease conditions. So this is how we prepare the death death chart. Okay. So the International Conference of the Seventh Revision of International Classification of Diseases was held in Paris under the auspices of WHO in February 1955. By this time, WHO was formed, and now the WHO was leading this whole process of discussion. And under their guidance, the revision of these classification of death list or disease condition will be under their guidance. Okay, and they will be now converting that death list into the international classification of diseases. Okay, then eighth conference was held in Geneva
And International Conference of Ninth Revision was held in Geneva, 30th September to 6th October 1975. So this is a little bit a big time duration. And for the benefit of users, the ninth revision included an optional alternative method of classifying the diagnostic statement. So now we are not focusing only the death causes, but we are focusing on each and every diagnosis. Okay, a statement including the information about both an underlying disease and a manifestation in particular organ or site. So आपका जो भी underlying disease condition है, diabetes है, hypertension है, and how they are going to affect a particular organ, वो भी we are going to discuss. Okay, this system becomes known as Dagger and Asterisk system and restrained in 10th revision. Okay, so now this system is more and more refurnished, and we are adding something into that particular place, so it will make the study more easier and more healthier. Okay, so what is the exact difference between ICT 9 and ICT 10? So ICT 9 में आपका 17 chapters will be there, and ICT 10 22 chapters. Because when we are doing revision, there are in those 10 years, 20 years leave, what happens usually? Ki more categories of diseases will be added. So ICD 9, the numeric code we use 0012 triple nine. Okay. But in case of ICD 10, we follow alphabetic leading to numeric numbers. Okay. And then the diagnostic code is of 3 to 5 characters in length in case of ICD 9, but in case of ICD 10, it will be related to 3 to 7 characters in length. Approximately 13,000 diagnostic codes will be added into your ICD 9, but 68,000 diagnostic codes you will find it into ICD 10. They're limited space for adding new, but flexible for adding new codes. Lots of details, very specific. If you go into ICD 10, you will check very specific. Lack literality has literality. Means कि आपको literally कोई और चीज भी add करनी है, you will be easily able to add it. Okay. So these are the different comparisons if I talk about related to ICD 9 and ICD 10. Okay, last is your ICD 9 is based on outdated technology. ICD 10 reflects the current uses of medical terminologies and devices. Whatever, for example, if I'm doing any procedure, they had a code for procedure also. What is the exact, the tools I'm using, for example, if I'm operating any where means let's take an example of Ispego emulsification is a procedure which we are doing for motiabin cataract. Okay, cataract. So we are placing IOL with with or without contact lenses or with or without Fago emulsification. So under LA we used to do so every detailed relation. If you want to write about your procedure, you had every details. Every code for every process will be mentioned in this, so it will be easy. Same thing happens with your disease condition. For example, you have UTI with or without fever, with or without symptoms. Everything. If I talk about headache, there is a code. R10 is there. Fever, there is another code. If you had, diabetes, they had a code for that. Hypertension, ischemic heart diseases, ICD, I11, I20, all these codes will be mentioned over there related to particular disease condition in case of ICD-10. Okay. And currently or majorly we are using ICD-10 only. Okay. So what is the purpose and applicability? If I talk about so systemic recording, आपका कोई भी disease condition है, whether you want to record for your personal use or for professional use in any clinic, in any hospital, it will be very easy. Okay, systemic recording. For example, you want to study what is the death due to your this, I can say, uh, due to
diabetes or due to hypertension. So how you will check? You will check all the files. You put the cases ICD-10 related to, and I-10 or I-20, all the cases related to that particular, disease condition will open into your file. Now you check what is the mortality rate. In that you can easily compare after checking the data. Ki what is the exact cause? So analysis and interpretation of any particular disease condition will be very easy. The data shortening. I can see it is like data shortening. कि आपने एक पर्टिकुलर कोड डाला अपने सिस्टम में रन किया सारा फाइल related to that particular code will be easily open up, and now what you have to do is once the file is open up you can check what is the exact analysis, whether the patient will be, if you give certain kind of treatment, so you can compare, ki, okay, if we are giving such kind of treatment, the treatment response is this much percentage. If we are using another modality of treatment or other modality of treatment, what is the response on human body? So analysis and interpretation will be very easy. Okay. Comparison of mortality and morbidity data collection into the different countries or different areas at different times. So basic reason for this statistical analysis or this ICD classification is this. See, we can collect the data, we can check how severe that particular disease is every part of country or every part of world. Okay. So ICD is used to translate the diagnosis of disease and other health problems from word into alphanumeric codes, and which permits easy storage, retrieval, and analysis of data. So what happens? KICD is used to translate the diagnosis of disease and other health problems from words into the numeric codes, which is easily permit the storage, retrieval, and analysis of data. The analysis of general health situations of population group and monitoring of incidence and prevalence of diseases. कि how frequently that diseases are happening, or at particular age group or at particular time how frequent that disease will be seen into the population, and what is the health problems, why such things will be happening into particular condition or into the particular season. So why this disease condition is happening or into the particular age group. So you can easily characterize the things and relate and study what is the exact cause, and now you can come with the treatment modality. Okay. So how we are going to classify this? Okay. So if I talk about classification, first is your reference classification, second is your derived classification, and third is your relative or related classification. So these are the different types of classification which we are going to follow in ICD. Okay. So what is the reference classification? Covers the main parameters of health such as death, disease, functionality, disability, health, and health intervention. Product of international agreement have achieved a broad acceptance and official agreements of for users. Okay, and approved and recommended as guideline for international reporting on health. For example, International Classification of Diseases, International Classification of Functioning Disability and Health, and International Classification of Health Interventions under the development. So these are the reference classifications. Okay. So what is the derived classification? Based on reference classification, जो आपका basic reference classification है कि किस disease से death ज्यादा होता है या किस disease से आपका जो है disability ज्यादा है, ठीक है, functionality of the disease और basic कि what kind of health interventions we need to do into that particular condition. So on the basis of all these three categories, we prepare the adopting reference classification or structure of classes, providing the additional details beyond that is not provided into the reference classification. Okay, may be prepared through the agreement or agitation of items from one or more reference classifications. For example, application of ICD to dentistry or stomatology, ICD to neurology, dermatology, pediatrics, rheumatology, and orthopedics. So these are the, reference कि आपने ICD classification तो ऐड कर लिया, ठीक है. But now ICD
For dermatology क्या है, for dentistry क्या है. So these are the reference classification. Related classification is partially referred to the reference classification. Okay. Like international classification of primary cares. Okay. External causes of injury. Okay. Then anatomical therapeutical classifications are defined as daily doses, okay, and technical aids to the persons with disability and terminology. So these are the basic classifications. Now we are going to study the ICD-10 with third volume, which is we are currently using. Okay. So volume 1 is your tabular list, volume 2 is your instructional manual. Okay. So volume 1 contains the reports of conference classification itself at 3 or 4 character levels. Okay, आपका 3 or 4 character level first maybe the and like when we classify the disease under ICD-10, so आपका जो categories है A B C D E F G H I J K L M N O P पूरे Z तक होता है. अब Z जो है वो anomalous है, anomalous और like आपका जो आपका health checkup होता है वो Z0 से कोड होता है. Okay. Then, if I talk about like certain unidentified condition or traumatic conditions, they will be also कि आप implant डाल रहे हैं या कुछ ऐसा, तो वो भी आपका Z कैटेगरी में आता है. ओके. अब आपका जो कार्डियक डिजीज होता है वो आई कैटेगरी से है. ठीक है. एंडोक्राइन इज रेफर्ड बाय ई कैटेगरी. एंड इनिशियली इफ आई टॉक अबाउट सी डी एंड बी, तो दीज आर सर्टेन डिजीज कंडीशन जो आपकी कैंसरस कंडीशन को आइडेंटिफाई करता है. तो अल्फाबेटिक वाइज. ओके. सो द 4 levels morphology of neoplasm specific to, so this 3-4 कैरेक्टर्स होता है. जैसे कि आपका मोर्फोलॉजी ऑफ न्यूप्लाज्म किस लोकेशन पे है वो कैंसर. ओके. स्पेसिफिक टेबुलर लिस्ट फॉर द मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी डेफिनेशन. ओके. एंड nomenclature regulation. तो ये आपका बेसिक है. वी विल टेक एग्जांपल एंड देन यू विल अंडरस्टूड. ओके. सो वॉल्यूम 2 इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है जो कि कंटेन करता है नोट्स एंड सर्टिफिकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन विद गुड डील्स एंड न्यू बैकग्राउंड एंड इंस्ट्रक्शनल मैटर और गाइडेंस. सो वॉल्यूम 1 को एडिशनल और मोर मॉडिफाइड आप कह सकते हैं, मोर प्लान वे में यूज करने के लिए वी फॉलो वॉल्यूम 2. ओके. It also includes the historical material formed presently into the introduction to volume 1. Okay. So volume 3, now we are coming to the alphabetic index. Okay. And how this is the most, commonly used volume 10. Okay. ICD-10 का volume 3 we are most commonly using into our day-to-day life. Okay. Into official purpose. So volume 3 में if I talk about, there is 3 sections or 3 sections you can take. First is your chapter 1 to uh, 1 to 22 chapters. Okay. Now, second is index कि internal cause क्या है morbidity का. Okay. And mortality का. And classification based on different terms to chapters. Okay. Last is the third section is table of drugs and chemicals. कि which condition contains which thing. Okay. So the first ICD code is letter. आप कोई भी आईसीडी 10 की मैं बात करूँ तो आपका फर्स्ट जो कोड होगा वो अल्फाबेट होता है. ABCD, it may be any alphabet and that particular alphabet indicates certain things. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका C आपका D अल्फाबेट है या B अल्फाबेट, इट्स न्यूप्लास्ट. तो अगर आप मैं D अल्फाबेट की बात करूं तो D अल्फाबेट डेफिनेटली इंडिकेट्स द neoplasm in chapter 2. And in chapter 3, disease related to blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism. So you can see कि अगर हम chapters को change करें तो alphabets के codes भी change हो जाते हैं. Okay. H is used in both chapters, chapter 7 also and chapter 8 also. So H chapter 7 में disease of eye and adrenexia represent करता है, but in chapter 8 diseases of ear and mastoid process. So you can see कि whenever we are doing ICD-10 ICD, so we need to focus कि what is the first position of their code and according to which chapter we are
using. Okay, so let's talk कि चैप्टर 1 इज रिलेटेड टू आपका किन किन ब्लॉक्स को कवर करता है. तो चैप्टर 1 जो है आपका A00 से लेके B999 तक इंक्लूड करता है चैप्टर 1. इसमें क्या होता है कि आपका इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक डिजीजेस को मेंशन किया जाता है. C and D is always representative of your neoplasm. So C00 से D48 तक आपका neoplasm होगा. D50 से D89 आपका रिप्रेजेंट करेगा डिजीज ऑफ ब्लड फॉर्मिंग. ओके, तो यू कैन सी कि जो मैंने अभी पीछे बोला चैप्टर 2, तो डी अल्फाबेट विथ कोड 48 आपका न्यूप्लाज्म होगा. बट 49 अगर आ गया या 50 आ गया, तो 50 से आपका जो है D89 आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्लड रिलेटेड डिजीज. ओके, E00 टू E90 आपका एंडोक्राइन होगा. डायबिटीज एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस. F00 to F99 mental and behavioral disorders. Okay, G00 to G99 disease of nervous system. H00 to H59 disease of eye and adrenexia. H60 to H95 disease of ear and mastoid process. I00 to I99 disease of circulatory system, जो मैंने आपको बोला कि कार्डियक है, इस्केमिक डिजीज है, सबकी कोडिंग इसमें होती है. ओके, G00 टू G99 रेस्पिरेटरी डिजीज आपका इसमें कवर होगा, निमोनिया एंड ऑल काइंड ऑफ डिजीज. ओके, K00 टू K93 disease of your digestive systems will cover under this category. Okay, L00 to L99 disease of skin and subcutaneous tissues. इनके बीच में सारे डिजीज कंडीशन इस कैटेगरी के कवर होंगे. M00 to M99 disease of mucoskeletal and connective tissues. Okay, नाउ N00 टू N99 आपके जितने भी जेनिटो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है वो इसमें कवर होगा. यूटीआई हो गया, या कोई आपका जो है नियोप्लाज्म हो गया, या फाइब्रॉइड हो गया, फीमेल्स को होता है. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी. ओके, stone, calculi, everything will be covered under this category. Okay, then O00 to O99 pregnancy, child and peri प्यूरिनियम पेरियो, ये कैटेगरीज जो आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड है, चाइल्ड रिलेटेड है, चाइल्ड बर्थ एसोसिएटेड जो भी आपका डिजीज कंडीशन है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी. ओके, P00 to P96 certain conditions originating into the perinatal period, like during the pregnancy, what all things will be, you know, arises into the child or arises into the during this period, during the pregnancy period. So that will be covered under P00 to P96. Q00 to Q99 आपका congenital malformation during the birth, or the by birth जो भी malformations होता है, deformations होता है, या chromosomal abnormalities या Down syndrome से everything will be covered under this. R00 to R99 signs, symptoms and abnormal, जैसे कि आपका फीवर हो गया, हेडेक हो गया. ओके, तो ये आपका जो है इसमें कवर होगा. ओके, जो कहीं और क्लासिफाइड नहीं है, अर्लियर कैटेगरीज में आपका मेंशन नहीं है, वो इसमें कवर्ड होगा. ओके, S00 to T98 injury, poisoning and certain other consequences of external causes. ओके, आपका कोई इंजरी हो गया, कोई फूड पॉइजनिंग, या कोई ड्रग पॉइजनिंग हो गया, या कोई मेटल पॉइजनिंग हो गया, और एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ ऑल दीज कंडीशन, ये सारा इसमें मेंशन होता है. V001 to Y98 external causes of morbidity and mortality. Okay, Z00 to Z99 the factor influencing the health status and contact with health services. जैसे मैंने आपको बोला Z00 हम किसको कोड करते हैं, तो हेल्थ चेकअप्स को. तो आपका हेल्थ स्टेटस चेक कर रहे हो उसमें कि हेल्थ चेकअप करके एग्जैक्टली कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, हम हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, तो इट इंडिकेट योर हेल्थ स्टेटस. ओके, U00 to U99 the codes for special purpose. Okay, तो कोई specific purpose में आपको कोई coding करना है तो उसके लिए हम use करते हैं. Okay, so these are the basic classifications which we follow into ICD 10. ओके, सो जितना भी है ये बेसिक आपका मेजर मेजर चैप्टर्स में आपको यही देखने को मिलेगा, एंड यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली. 22 चैप्टर्स हैं जिनमें आपके डिफरेंट अल्फाबेट्स को डिफरेंट न्यूमेरिक कोड्स के साथ मिक्स करके एंड डिफरेंट डिजीज कंडीशन और डिफरेंट एरिया लोकेशन डिजीज कंडीशन को
रिप्रेजेंट किया गया। ओके So chapters are subdivided into homogeneous blocks of three chapters or three uh, character categories. Chapter 1, the block is titled reflects two axes of classification and mode of transmission and broader group of infecting organisms. तो कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं? मैंने अभी बताया कि हम मेजरली पहले तो अल्फाबेटिक वाइज हमने क्या किया, सारे उनको डिवाइड कर लिया। नाउ अब हम उनको फर्दर पॉजिटिव एजेंट बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि कौन सा ब्रॉडर ग्रुप है, क्या इफेक्टर है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फर्दर डिवाइडेड। ओके टू में क्या होगा कि बिहेवियर ऑफ न्यूप्लाज्म की मेटास्टैटिक है, बेनाइन है, कैसा है विद इन द पर्टिकुलर साइट पे लोकेटेड है। बेनाइन मीन्स कि आपका whenever the cancer or the neoplasm is growing, it will stay into that particular area only. Metastatic means it will migrate to the another areas. Okay so on the basis of that we further classify. Okay so आपके ल्यूकेमियाज, लिम्फोमाज, मेलिनोमाज, mesothelioma और ये sarcomas, all these things will be a part of your cancerous condition. Okay कैंसर डिजीज कंडीशन को इंडिकेट करता है। ओके तो आपका जो बिहेवियर है प्लांट का उसके बेसिस पे भी फर्दर क्लासिफाई द चैप्टर 2। सो द फोर्थ सब कैटेगरीज क्या होगा आपका कि वेयर द थ्री कैटेगरीज will divided into recommended letters and used to be filled the positions or codes। सो इसके बेसिस पे हमारा स्ट्रेंथ और आपका डाटा प्रोसेसिंग में लेंथनिंग होती है कि कितने कोड्स है। तो यूजुअली आप देखेंगे A001, 003, 004 या U19, E11। तो बेसिकली आप 3 तो मिनिमम कोड आप मान के चलिए और मैक्सिमम 7 तक होता है पॉइंट 19.17, क्योंकि वो पॉइंट 19.17 जो है वो आपको स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन या स्पेसिफिक सब कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सो लेट्स हैव अ लुक। A00 कॉलेरा कंडीशन है, ठीक है। A00.00 तो अब A00 तो आपको पता है कि कॉलेरा है, यहाँ पे भी A00 कॉलेरा है, बट 0.0 मीन्स ड्यू टू विब्रॉइड कॉलेरा और बायोवियल कॉलेरा। तो आपने क्या किया उसको कि पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है हम उसको क्या करें, सब क्लासिफिकेशन मीन्स कि कॉलेरा तो है बट ड्यू टू दिस वेक्टर और ड्यू टू दिस पॉजिटिव पैथोजन। ओके then A00.1 is due to vibro cholera by electro cholera electro। तो आप ये देखिए कि जो पॉजिटिव एजेंट है जब उनका क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है, उनकी कैटेगरी चेंज हो रही है, तो पॉइंट के बाद का डिजिट वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके A00.9 तो ये अनस्पेसिफाइड कंडीशन है जिसमें हमें एग्जैक्टली पॉजिटिव एजेंट पता ही नहीं है। ओके A01 is typhoid and paratyphoid fevers होता है। A01.0 is exact for typhoid fever की पेशेंट को सिर्फ टाइफॉइड है ड्यू टू सैल्मोनेला टाइफी की वजह से है। A001.1 is your typhoid fever A, paratyphoid fever A, and point 2 is your paratyphoid fever B। So you can see कि how we are classifying further means कि मैंने अभी तक आपको बताया कि ए कैटेगरी ये रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट जो है पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन, सिर्फ पॉइंट के बाद के जो डिजीज कंडीशन है वो पॉइंट के बाद का जो न्यूमेरिक है वो क्या रिप्रेजेंट करे, सब कैटेगरी की व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉजिटिव एजेंट इनटू दैट पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन। ओके so this is how we classify, the basic classification. If I talk about, this is how we classify the ICD-10। ओके आपका फर्स्ट डिजिट है वो अल्फाबेट होगा, सेकंड 2 न्यूमेरिक्स होते हैं, ठीक है। और पॉइंट के बाद के जो 1 और 2 डिजिट होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके सब कैटेगरी। ओके so the supplementary subdivisions uses at level 5th or the subsequent characters. The 5th subsequent characters are usually sub-classification along with different X's from 4 characters found in. So अब इसके बाद फर्दर हम क्या यूज करते हैं, एनाटॉमिकल साइट कि ये पर्टिकुलर न्यूप्लाज्म है, ये पर्टिकुलर साइज का है, या ये पॉजिटिव एजेंट है, बनाई है मैलिग्नेंट है और इस पर्टिकुलर साइट पे है। तो ये आपका further subdivision हो गया। ओके सब डिविजन टू इंडिकेट और ओपन एंड क्लोज फ्रैक्चर्स एज वेल एज।
तो फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रैक्चर्स के केसेस में क्या होता है कि ओपन फ्रैक्चर है, क्लोज फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर एंड क्लोज फ्रैक्चर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स इफ आई टॉक अबाउट। मीन्स कि जैसे वुंड है, वुंड अगर एक्सपोज हो गया तो इट विल बी ओपन। अगर वो इंटैक्ट है और मसल्स के बाहर नहीं है तो इट विल बी लाइक क्लोज इंजरीज। ओके, सो इंट्राक्रेनियल है, इंट्राथोरेसिक है, इंट्रा abdominal इंजरीज है, विद और विदाउट ओपन वुंड है। तो इस टाइप का हम फर्दर क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज में, सब्सिक्वेंट कैटेगरीज में वी डू। ओके, सो so ICD-9 introduces a system and containing ICD-10 where there are two codes. Primary code is used for underlying disease condition is marked with a dragon, or the optional conditions code for manifestation is marked with asterisk. तो आपकी जो कोड्स होते हैं, मतलब जो एस्टर रिस्क होता है, स्टार शाइन शाइन होता है आपके मीन्स इंडियन स्पाइसेस में भी एस्टर रिस्क होता है, स्टार शेप्ड आपको एक फ्लावर टाइप का मिलता है, सेम थिंग। और वो कोड जो है वो आपका एडिशनल ऑप्शन के लिए हम यूज करते हैं। बट अंडरलाइन डिजीज कंडीशन है, अगर प्राइमरी कोड जो अंडरलाइन डिजीज कंडीशन का है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ड्रैगर, एक ड्रैगर इज लाइक योर खंजर। सो वैसा हम सिंबल देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक फर्दर एडिशन। तो नाउ वी हैव सीन कि पांच के बाद छठा अगर हम ऑप्शनल कुछ यूज करें तो ये कैटेगरीज होती है। ओके, so it is the principles of ICD that the Dragon code is primarily coded and must be always used। तो आपका जो ड्रैगर कोड है वो आप हमेशा यूज करेंगे, प्राइमरी यूज करेंगे। ओके, For coding, the asterisk code must never be used alone। आपका जो कंडीशनल कोड, asterisk is your conditional code। तो कंडीशनल कोड्स आप कभी भी अकेले यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कंडीशन किसी के साथ एसोसिएटेड होगी। ओके, so however for morbidity code, the dragon and asterisk sequence may be reversed when the manifestation of diseases of a primary focus of care। Okay, so in cases of death cases हम इनको रिवर्स कर सकते। ओके, आप सिर्फ सिंपली जो है एस्टेरिस्क को यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, A17 आपने वहां पे ड्रैगन कोड यूज किया। ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस G01 आपने वहां स्टार रिस्क। तो आपका क्या है इसमें जो है, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस मींस कि ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज कंडीशन। अब वो कहाँ स्प्रेड हो गया आपका, मेनिंजीज और सेरेब्रल में। तो एसोसिएटेड कंडीशन है ना कि ट्यूबरक्लोसिस तो है पेशेंट को, पर वो कहाँ स्प्रेड हो गया, वो कंडीशन कहाँ है आपका, एसोसिएटेड कंडीशन है वो सेरेब्रल और स्पाइन में। ओके, so this is what we are talking about। Okay, tuberculosis of genitourinary system। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ड्रैगर यूज किया। अब ट्यूबरक्लोसिस ऑफ ब्लैडर, तो ब्लैडर का N33, अब वहां पे एसोसिएटेड कंडीशन है तो स्टार मार्क कर देंगे। सर्विक्स, तो आप जो है इनिशियल कोड को तो लिखेंगे लिखेंगे जो ट्यूबरक्लोसिस का है, पर जहां जिस लोकेशन पे है वहां पे आप एडिशनल ब्रैकेट में लिख के आप स्टार मार्क कर देंगे। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड और हाईलाइटेड काइंड ऑफ थिंग ना, टर्म एंड कंडीशंस टू बी नोटेड जैसे स्टार मार्क के साथ होते हैं, वैसे ये एडिशनल स्पेसिफिक कंडीशन है, एसोसिएटेड कंडीशन है, इसलिए हम इसको ऐसे कोड करेंगे। ओके, क्लियर? So, if the symbol nor alternative appears in the title, the rubric as whole and not subject to dual classification, but the individual inclusion terms may be. If so, the term will be marked with the symbol and their alternative codes will be given। Okay, so कह रहे हैं कि अगर symbol का कोई alternative code appear नहीं हो रहा है in the title और rubric में, आपने दोनों में चेक कर लिया, तो होल सब्जेक्ट को हम ड्वेल क्लासिफिकेशन कर देंगे, दो बार क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि निमोनाइटिस को आप या निमोनिया को आप ड्रैगन मार्क भी करेंगे और उसके कोड को स्टार मार्क भी करेंगे। तो दिस इज हाउ वी डू। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वी फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग, बट बेसिकली आप जो यूज करेंगे इन मेडिकल रिकॉर्ड,
तो आप डिजीज कंडीशन को कोड करने के लिए यूज करेंगे whenever you are saving any records into the system or something for retrieval, easy retrieval of the patient file. तो आप जनरल कोड ही यूज करेंगे. दिस इज वेरी रेयर कंडीशन जहां आपको ये सब यूज करना पड़ेगा. ओके, तो आप सिर्फ एक जैसे नॉर्मल कोड है A54.8, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज. ओके, ये ड्रैगर कोड्स एंड एवरीथिंग इज वेरी रेयर कंडीशन, क्योंकि हम ये स्टैटिकल एनालिसिस पार्ट पे, व्हेन यू आर इनटू द एनालिसिस, आप स्टैटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, तब आप ये कोर्स को यूज करेंगे, सर्वेज में यूज करेंगे. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर एनी रिसर्च कैटेगरी, in that scenario you need to have the depth knowledge of that. If you are just planning for any job related to hospital management and everything related to that, so you will follow just simple code like A54.8. That is enough for you people. Okay. So any doubts, any queries related to lectures? So with this, the basics of ICD is covered. In next class, we are going to, have quick, we will check certain common conditions and codes for ICD 10. So, and we have ICD 11 also. In last meeting, ICD 11 has been approved by WHO, but not practiced worldwide right now. But in coming years, that volume 11 will be practiced. Okay. So I'll give the quick review of volume 11 in next class. Okay. Just go through these and have an idea related to all of this. Okay. So have a nice day, and I'm ending this lecture now. Okay.